Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to discuss the last topic of evolution, that is evidence of evolution. Evolution leaves observable signs. Evolution जो है ना science के through observe हो सकती है. Darwinism is based on evidences from geographical distribution of animals and from fossil record. डार्विनिज्म के एविडेंसेस हमें कहाँ से मिलते हैं? जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स से और फॉसिल रिकॉर्ड यानी पैलियोंटोलॉजी से मिलते हैं. However, new discoveries continue to validate evolutionary view of life. New discoveries भी की जा रही हैं और वो भी इस evolutionary view of life को validate करती हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं evidences from biogeography. The geographical distribution of species is called as biogeography. According to Darwin, islands have many species that are endemic but closely related to the species of nearby islands. मतलब islands के जो species है ना वो ऐसे हैं कि वो उसी island तक restricted है, लेकिन ऐसा है कि उनका जो relation है वो nearby island से हम relate कर सकते हैं उनको. For instance, armadillos are found only in America. सिर्फ अमेरिका के अंदर armadillos found होते हैं. लेकिन evolutionary view show करता है कि armadillos basically descendants हैं species के जो previously इन्हीं continents के अंदर रहती थी. किन continents के अंदर? अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर. And fossil record भी confirm करता है existence ऐसे ancestors की. Similarly, साउथ अमेरिका के अंदर रैबिट्स नहीं थे. Although जो environment है साउथ अमेरिका का वो रैबिट्स के लिए बहुत suitable है. He concluded that there were no rabbits in South America because they had no means to reach it. साउथ अमेरिका के अंदर रैबिट्स इसीलिए नहीं है क्योंकि रैबिट्स के पास कोई जरिया ही नहीं है साउथ अमेरिका तक पहुंचने का. बायोजियोग्राफी के बाद हम डिस्कस करेंगे एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी. The succession of fossils is a strong evidence in favor of evolution. Fossils की जो succession है वो भी evidence provide करती है evolution की favor में. Fossils are actually remains or traces of organisms that lived in ancient geological times. Basically जो organisms previously inhabit करते थे different habitats को, उनके जो remains होते हैं उनको fossils बोलते हैं. Most fossils are found in sedimentary rocks. किधर के found होते हैं? Sedimentary rocks के अंदर. The oldest fossils known are prokaryotes. सबसे oldest fossils जो हैं वो prokaryotes के मिले थे. The chronological sequence of different classes of vertebrates is fishes, fishes के बाद amphibians, amphibians के बाद reptiles, reptiles के बाद mammals और mammals के बाद finally birds. फॉसिल रिकॉर्ड अलाउ करता है कि हम ट्रेस कर सकें हिस्ट्री ऑफ वन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल मॉडर्न डे हॉर्स एक्विस. द अर्लीस्ट हॉर्सेस हैड 4 toes. सबसे पहले जो हॉर्सेस होते थे उनके पास 4 toes होते थे. ओवर टाइम द नंबर ऑफ toes रिड्यूस टू 3. फिर उसके बाद वो 4 से 3 हो गए and ultimately 3 से that number is reduced to 1, a large toe that ends in a hoof. Biogeography or paleontology के बाद we are going to see evidences from comparative anatomy. Anatomical similarities between species grouped in the same taxonomic category also support evolution. जो anatomical similarities है ना species के दरमियान जो एक ही taxonomic group के अंदर है वो भी support करते हैं evolution को. इसमें हम देखेंगे पहले homologous structures. वो structures जो structurally तो similar हैं but functionally different हैं वो homologous होते हैं. This pattern of evolution in different species in which they evolved from a common ancestor at different habitats is called divergent evolution. ये divergent evolution है. Ancestor common है लेकिन फिर different habitats में जब वो organisms गए तो उनके organs के functions different हो गए. जो एग्जाम्पल है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की वो है पेंटाडेक्टाइल लिम्ब. ये मैन के अंदर भी प्रेजेंट है, ये चीता के अंदर भी प्रेजेंट है, ये व्हेल के अंदर भी प्रेजेंट है, ये बैट के अंदर भी प्रेजेंट है. बैट के अंदर ये यूज होगा फ्लाइंग के लिए, व्हेल के अंदर यूज होगा स्विमिंग के लिए, चीता के अंदर यूज होगा रनिंग के लिए. मैन के अंदर एक नंबर ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, एबडक्शन, एडक्शन, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज ये परफॉर्म कर सकता है.
होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल क्या है कि सेम skeletal elements make up the four limbs of humans, cats, whales, bats and other mammals. Limb bone pattern of all tetrapods from amphibians to mammals have the same structural plan. स्ट्रक्चरल प्लान टेट्रापोड से लेके एम्फीबियंस हो चाहे उसमें या मैमल्स हो सबका सेम है और इसके कहते हैं पेंटाडिक्टाइल लिम्ब जो फोर लिम्ब है. Homologous structures के बाद we are going to see the analogous structures. Analogous structures क्या है कि they are structurally different but functionally similar है. This pattern of evolution is known as convergent evolution, in which different species have evolved from different ancestors at a common habitat. Habitat उनकी common थी, लेकिन वो different ancestors से originate कर रहे थे, इस वजह से functions जो है उनके similar हो गए. For example, wings of birds and insects. अब हम एक डायग्राम देख लेते हैं. इसमें आप देख सकते हैं ये एक बर्ड का विंग है बड़ा सा और इसके साथ ये एक बटरफ्लाई का विंग है. दोनों का फंक्शन जो है वो फ्लाई करना ही है, लेकिन इनका जो एंसेस्टर्स हैं वो डिफरेंट है. एविडेंस फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लास्ट पॉइंट है इसमें. Evolutionary relationships among species are reflected in their DNA and proteins, in their genes and proteins. Genes में और proteins में और DNA और proteins में evolutionary relationships reflect होते हैं species के. Molecular biology strong evidence provide करती है in support of evolution as basis for unity and diversity of life. Examples में आ जाएगा similarity in codons, introns, cytochrome C, etc. It's time to discuss the practice question. Practice question की statement हमारे पास है. Dash are the organs that had important functions in ancestors but are no longer essential. कौन से organs हैं जिनके ancestors के अंदर important functioning थी लेकिन अब वो इतने essential नहीं है? Option A homologous organs, Option B analogous organs, Option C vestigial organs, and Option D is both A and B. करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनती है वेस्टिजियल ऑर्गन्स, दैट इज ऑप्शन सी. Vestigial organs are the historical remnants of structures that are important in ancestors and are no longer essential. Historical remnants ancestors में important थे, अब उनकी इतनी जरूरत नहीं है. इसकी एग्जांपल अपेंडिक्स हो सकता है, जो विजडम टीथ हैं वो इसकी एग्जांपल्स हैं. I hope today's lecture was clear. Thank you very much.